This call is now being recorded. Okay, good afternoon, everyone. Yesterday we have seen two types of signal, deterministic and random signals. Okay, now today we are going to see periodic, aperiodic, then odd or even. We can also call it as symmetrical or anti-symmetrical signals, and energy and power signals. Okay, ठीक है, कल हमने क्या देखा था? डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल एंड रैंडम सिग्नल. ओके, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल इज specified in particular time, and random signal is a random signal. Okay, it is also called as a non-deterministic signal. Now we have to see periodic and non-periodic or aperiodic signals. So first of all we will see the definition of periodic signal. Write down the definition of periodic signal: a signal which repeats itself after fixed time period is called as the periodic signals. For example, what are the examples of periodic signal? Sine wave, cosine wave, square wave. All these are the examples of periodic signals. This is amplitude A. Equation of this signal is x of t is equals to A sine omega t. This signal we have also seen in deterministic signal. Okay. This is period of repetition. मतलब क्या? ये जो साइकिल है, ठीक है, वो फिक्स्ड इंटरवल में क्या होगी? रिपीट होगी. फॉर एग्जाम्पल ये है 0 पाई 2 पाई, देन अगेन आफ्टर क्या आएगा यहाँ पे? 3 पाई. 3 पाई पे साइकिल क्या रहेगी? ऐसी. देन 4 पाई पे अगेन डाउन साइकिल. मतलब ये जो एक साइकिल है, कंप्लीट साइकिल, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे क्या होगी? रिपीट होगी. तो हम उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे. देन द नेक्स्ट वन इज नॉन पीरियोडिक और अपीरियोडिक. इसका अपोजिट रहेगा. ठीक है, अपोजिट इन द सेंस, वेट,
ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा नॉन पीरियोडिक का? A signal which does not repeat itself after a fixed time period or do not repeat at all is called as non-periodic. ठीक है, वो periodic क्यों था? क्योंकि वो specific time के बाद repeat हो रहा था. That's why it is called as periodic signal. अभी ये क्या हो रहा है? ये एक तो repeat हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता. ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? Non-periodic और aperiodic signal. So the definition of non-periodic signal is a signal which does not repeat itself after a fixed interval of time, or you can say after a fixed time, or do not repeat at all, is called as aperiodic signal. For example, x of t is not equals to x of t plus t theta. ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इन ग्राफ? ऐसे इसका एक स्लोप आएगा. दिस इज x of t. तो x of t क्या हो गया यहाँ पे? ये स्लोप का एक्सपोनेंशियल. तो ये हो गया हमारा अपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल. ठीक है, इट इज ऑल्सो सेड दैट अ पीरियोडिक सिग्नल हैज अ पीरियड t0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी. ठीक है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. Okay, got it? What is the difference between periodic and aperiodic signal? Periodic means which repeats itself after a fixed interval of time, and aperiodic means it will not repeat itself after a fixed time or even do not repeat at all. Okay, that is defined as aperiodic signal.